अपना सीए फाइनल ऑडिट का देखो, ये जो रिवीजन सीरीज़ है ये स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का है। तो अपना ऐसे 200 सीरीज़ एंड 300 सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, उसी प्लेलिस्ट में मैं ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ये ऐसे 500 सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे। ऑडिट एविडेंस, देखो ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। कॉन्सेप्ट नंबर 1, evaluating work performed by management expert for the purpose of obtaining audit evidence। क्या बोल रहा है? As per SA 500 on audit evidence, when information is used as audit evidence has been prepared using work performed by management expert, the auditor shall perform the following। क्या क्या है? Evaluate completeness, evaluate competence, that means qualification and membership of a professional body। Next, auditor needs to understand the work performed by expert, applicable professional and legal standards on the expert, evaluate appropriateness of the work of expert, relevance reasonableness of the findings and conclusions। तो ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंसेस, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द findings and conclusions by the expert, relevance and reasonableness of assumptions made by the expert, relevance, completeness and accuracy of source data used by the expert। And last paragraph है auditor का reporting requirement। If the auditor concludes that the work performed by management's expert is inadequate, then he shall communicate such matter to management to correct the same। If it remains uncorrected, then the auditor shall issue a modified report as per SS 705। Also, if the auditor thinks it appropriate, he may appoint an expert as per the provisions of SA 620। Then, concept number 2, matters affecting nature, timing, extent of audit procedures in case of auditor uses information by management expert as audit evidence। तो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, यहाँ पे ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा? नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर टू विच द वर्क रिलेट्स, nature and complexity of the matter to which the work relates, then associated risk of material misstatement with the work of expert, nature and complexity of the matter to which work relates, associated risk of material misstatement with the work of expert, availability of alternate audit evidences, then the auditor's past experience with the expert, whether the expert is subject to any professional standard, prescribed by any professional body, the extent of management control or influence over the work of expert, then nature, scope and objective of the expert's work। तो ऑडिटर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन सा चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर टू विच द वर्क रिलेट्स, एसोसिएटेड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंसेस, द ऑडिटर्स पास्ट एक्सपीरियंस विद द एक्सपर्ट, whether the expert is subject to any professional standard prescribed by any professional body, the nature of management control or influence over the work of expert, nature, scope, objective of the expert's work। Concept number 3, inquiry as one of the method of collecting audit evidence। As per SA 500, inquiry is one of the methods of collecting audit evidences। इसका मतलब क्या है? इंक्वायरी आपका एक ऑडिट प्रोसीजर हो गया। Inquiry consists of seeking information of persons. Inquiry consists of seeking information of persons, both financial and non-financial aspects, within or outside the entity. Inquiry is used extensively while auditing alongside other audit procedures. Inquiries may range from formal written inquiry to informal oral inquiries. However, in case of oral inquiry, the auditor may consider it necessary to obtain written representations। देखो ये क्या बोल रहा है पॉइंट, ये बोल रहा है however in case of oral inquiry the auditor may consider it necessary to obtain written representation from management to confirm responses to such inquiry।
responses to inquiries may देखो जो भी response आता है, responses to such inquiries may provide the auditor with information not previously possessed. Responses might provide information that differs from information previously obtained. मतलब departure from कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को चेक करने का मौका मिलता है. इन सच अ केस रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी प्रोवाइड्स अ बेस टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स. देन यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 4, एसेसिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. यहाँ पे एक जनरलाइज्ड रूल का बात बोलना है. मोर रिलायबल, देखो मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सोर्सेज. Internal evidence is more reliable when controls are more effective. Audit evidence obtained by the auditor directly is more reliable than indirect evidence. Written evidence, that is in paper form or in electronic form, is more reliable than oral evidence. Audit evidence in the form of originals is more reliable than photocopies or extracts. तो गाइस यहाँ पे अपना essay 500 ख़त्म होता है. ओके, नेक्स्ट essay इज essay 501 ऑडिट एविडेंस. देखो essay 501 का टाइटल है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स. ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स. यहाँ पे दो टॉपिक कवर, ये essay में दो टॉपिक कवर्ड है. इन्वेंट्री काउंटिंग, दैट इज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एट अ डेट अदर देन डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक केस हो गया. दूसरा केस है मैनेजमेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन. सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है कि इन डेज 34 यहाँ पे बात चल रहा है. ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी कैरिड आउट इफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन. एज पर essay 501, ऐसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, essay 501 स्टेट्स दैट द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विथ रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस and present condition of inventory by physical inventory counting unless it is impracticable to, मतलब ऑडिटर स्टॉक फिजिकल स्टॉक टेकिंग करेगा unless it is impracticable to inspect the inventory or unless it is impracticable to inspect the inventory or perform test counts. if उसके बाद यहाँ पे देखो, ये मैंने एक अलग से यहाँ पे दिया है, ये बुक में नहीं मिलेगा. ऑडिटर शैल ऑल्सो रिपोर्ट इन कारो 2020 अंडर क्लॉज 2 of para 3 if the inventories are verified in reasonable intervals by management, that is हर साल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं. देन डिपर्चर्स, मतलब वेरिफिकेशन में कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी हुआ है, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी दे आर प्रॉपरली एड्रेस्ड और नॉट. इफ़ वर्किंग कैपिटल लोन टेकन ग्रेटर देन 5 crores अगेंस्ट इन्वेंट्री, तो वो भी रिपोर्ट करना होगा. अगर कोई इफ़ एनी रिवैल्यूएशन डन इन इन्वेंट्री ग्रेटर देन 10%, मतलब रिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है दैट इज़ ग्रेटर देन 10% ऑफ द हिस्टोरिक कॉस्ट, तो वो भी कारों में रिपोर्ट करना होगा. तो अभी essay 501 में वापस आते हैं. As essay 501 states that the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to existence and present condition of inventory by physical inventory counting unless it is impracticable to inspect the inventory or perform test counts. If physical inventory counting is conducted at a date other than the date of financial statement, the auditor shall perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to changes in inventory between the count date and the date of financial statement is properly recorded. Auditor shall check, यहाँ पे नीचे auditor क्या क्या चीज़ चेक करेगा. Whether perpetual inventory records are properly adjusted or not, reliability of entities' perpetual inventory records, reasons for significant differences between perpetual records and physical counts. उसके बाद concept number 2, examples of matters relevant in obtaining an understanding of the methods used by management for determining segment information.
As per SA 501, the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to presentation. देखो, auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to presentation and disclosure of segment reporting in accordance with applicable FRF. In case of listed entity, applicable FRF is Ind AS 34. Examples of matters relevant in obtaining and understanding of methods used by management for segment reporting. Sale transfers. देखो, sales क्या क्या है? सेल्स ट्रांसफर्स बिटवीन सेगमेंट्स, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट विच मीन्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स का एलिमिनेशन होना चाहिए. देन एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट्स अमंग सेगमेंट्स, कंपैरिजन ऑफ बजटेड विद एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ सेगमेंट्स, कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड्स, consistency of results with prior periods and adequacy of disclosures. ये दो चीज़ देखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी विथ प्रायर पीरियड्स एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स, ये चीज़ देखना पड़ेगा. उसके बाद SA 505 दैट इज़ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. SA 505 विच इज़ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज़ types of external confirmation and situations when external confirmation can be used. SA 505 defines external confirmation as audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party. ये definition important है. SA 505 defines external confirmation as audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party in paper form or electronic form. तो क्या कह रहा है? SA 505 defines external confirmation as audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party in paper form or electronic form. दो तरह का confirmation request होता है, positive confirmation request, negative confirmation request. Positive confirmation request, the confirming party responds to the auditor in both cases whether agrees or disagrees to the information. Negative confirmation request, the confirming party responds only if he disagrees to the information provided in the request. Negative confirmation request is a less persuasive audit evidence. Situations when external confirmation can be used as an audit evidence. सबसे पहला पॉइंट है assertions associated with account balances. Assertions associated with account balances, bank account balance and banking relationship information, accounts receivable balance and terms, accounts payables balance and terms, borrowings terms and outstanding balances, property title deeds held with lawyers for a safe custody, inventory held by third parties at warehouses for processing job work. Concept number 2, auditor's responsibilities when management refuses to allow the auditor to send a confirmation request to debtors under legal dispute. SA 505 requires the auditor should use, देखो, SA 505 requires the auditor should use external confirmation procedure in consultation with management. The auditor खुद से नहीं कर सकता है, उसको management का consultation लेके ही करना है. Auditor may come across situations when management refuses to allow the auditor to send external confirmation requests to certain parties due to an ongoing legal dispute. In such a case, the auditor shall, ये केस में ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शेल इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट द रीजंस एंड रिफ्यूज़ल. ऑडिटर शेल इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट द रीजंस ऑफ रिफ्यूज़ल एंड सीक ऑल्टरनेट ऑडिट एविडेंसेस. तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शेल इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट द रीजंस ऑफ रिफ्यूज़ल एंड सीक ऑल्टरनेट ऑडिट एविडेंस. इवेल्युएट द इम्पैक्ट, देखो, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ सच रिफ्यूज़ल ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल misstatement. Auditor shall evaluate the impact of such refusal on risk of material misstatement, including risk of fraud by management. Auditor shall perform alternate audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence. यहाँ पे लास्ट पैरा में ऑडिटर का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द रिफ्यूजल ऑफ मैनेजमेंट इज अनरीजनेबल, इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द रिफ्यूजल by management is unreasonable, or the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence by performing alternate audit procedures, auditor shall communicate such matter with TCWG and also determine if he is required to issue a modified report as per SA 705 or not. उसके बाद concept number 3, conditions for using negative confirmation request. देखो,
conditions for using negative confirmation request. Negative confirmation request in which the confirming party responds only if he disagrees with the information contained in the request. Negative confirmation request provides less persuasive audit evidence. Auditor shall use negative confirmation request only when all conditions are satisfied. Conditions क्या क्या है? When there is low risk of material misstatement associated, the population comprises a large number of small homogeneous transactions or account balances. When the population comprises of a large number of small homogeneous transactions or account balances, when there is a very low exception rate, low possibility that the recipients may not give a response to the request. तो चार बातें, चार कंडीशन में ये चार कंडीशन जो चार कंडीशन अगर फुलफिल होता है, in that case the auditor may use negative confirmation request. Low risk of material misstatement, the population comprises a large number of small homogeneous transactions or account balances, a very low exception rate is expected, low possibility that the recipients may not give a response to the request. उसके बाद initial audit engagements, opening balances. देखो ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस. अभी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होता क्या है? व्हेन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट उसको बोलेंगे वेयर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर नॉट ऑडिटेड और प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर. दो केस है, एक तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेर नॉट ऑडिटेड और प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर. तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, audit procedures for verification of opening balances in case of initial audit engagements. SA 510 initial audit engagements and opening balances. SA 510 initial audit engagements opening balances deals with auditor's responsibilities with respect to verification of opening balances. देखो क्या बोल रहा है? verification of opening balances इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स. तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स. Auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence about whether opening balance with respect to prior period contains material misstatement which affect the current year financial statement. Auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence about whether the opening balance with respect to prior period contains material misstatement which affect the current year financial statement. अभी audit procedures क्या क्या है? Whether prior period closing balance are correctly brought forward in current year. Whether prior period closing balances are correctly brought forward in the current year. When appropriate, items are disclosed as prior period item in current year's PL. Accounting policies adopted in opening balances are consistently applied in current year. Accounting policies adopted in opening balances are consistently applied in current year if any changes in accounting policy properly accounted for or not. Where prior periods financial statement were audited, ask for copies of audited financial statement and schedules to financial statement. Where previous years financial statement were audited, ask for copies of audited financial and other documents. Next, auditor needs to perform specific audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence about sufficiency in. देखो फोर्थ पॉइंट क्या है? Auditor needs to perform specific audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence about sufficiency and appropriateness of opening balances. If the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to opening balances, he shall express a qualified or disclaimer of opinion. एक तो qualified दे सकता है, नहीं तो disclaimer of opinion दे सकता है. If he concludes that a material misstatement exists, if the auditor concludes that a material misstatement exists in opening balance and it affects current year's financial statement and the thing is not properly accounted for, then adverse opinion भी दे सकता है. Then audit procedures दो केस में देखा जाएगा. when the previous year financial statement is audited by another auditor, ये एक केस हुआ. दूसरा केस क्या है? when financial statement are being audited for the first time. तो फर्स्ट केस में auditor may obtain sufficient and appropriate audit evidence by asking for copies of audited financial statement of previous year and schedules to financial statement
एंड दूसरा पॉइंट क्या है, ऑर्डिनरीली करंट ऑडिटर कैन रिलाई द क्लोजिंग बैलेंस इन current auditor can rely the closing balance in previous year financial statement except when there is a possibility of material misstatement in opening balances. दूसरा केस में when financial statement are being audited for the first time, auditor needs to perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to opening balances. Second point क्या है, since the auditor may not be able to perform certain audit procedures like physical stock taking of inventory finished goods, the auditor has to perform alternate, देखो, the auditor has to perform alternate audit procedures such as एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. तो ऑडिटर को ये ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करना होगा. इन केस देखो ये एक पॉइंट है, ये ऐसे का लास्ट पॉइंट यही है. इन केस प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, in a case when previous year's financial statement were audited by another auditor, any opening balances reflecting can be वेरीफाइड बाय परफॉर्मिंग ऑडिट. देखो ऑडिटर ये केस में ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या फॉलो करेगा. आज ऑडिटर में आस्क फॉर कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड शेड्यूल्स फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटर, ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. देखो ऑडिटर में ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अबाउट करेक्टनेस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस. ऑडिटर में ऑब्टेन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन फ्रॉम पार्टीज. if the auditor fails to perform these audit procedures, then he will be held guilty for professional misconduct for not exercising due diligence and grossly negligent. तो ये जो है यहाँ पे मैं एक लिंकिंग करा रहा हूँ. सेकेंड शेड्यूल में क्लॉज 7, देखो सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 7, इसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आएगा इफ़ द ऑडिटर फेल्स टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और इफ़ ही इज़ ग्रॉसली नेग्लिजेंट. तो गाइज यहाँ पे अपना ये 4 ऐसे का डिस्कशन ख़त्म हुआ. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग, ऐसे 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स. उसके बाद रिलेटेड पार्टीज. तो अगला ऐसे में ये 4 अगला वीडियो में मैं ये 4 ऐसे को डिस्कस करके चलूँगा. राइट, ऐसे 550 तक होगा एंड उसके बाद वाला वीडियो में 560, 570 एंड 580. तो गाइज और 2 वीडियो में अपना ऐसे 500 सीरीज़ का पूरा डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा. आई होप ये डिस्कशन रिवीजन वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहा है. अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो यू कैन डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. और आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड जय हिंद.